नौजवानों को ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे जी, बहुत आहिस्ता आवाज में इंशाल्लाह करेंगे जी इंशाल्लाह। आपने वादा किया जरूर, बस अपने आप से वादा करना है। जब हम वादा कर लें तो ये सब कुछ हो जाता है। आज मेरे पास जनाब इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब मौजूद हैं और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं 2-4 गुजारिशात इनकी खिदमत में भी पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इरफान सिद्दीकी साहब की खिदमत में गुजारिशात पेश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हुक्मरान जमात के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब इनसे बहुत प्यार करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इनके शागिर्द हैं और ये खुद भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के फॉर एजुकेशन के चेयरमैन हैं। सर, आपने सारी जिंदगी उस्ताद के तौर पर अपने बच्चों में पैट्रियोटिज्म पैदा किया, उन्हें मुहब्बे वतनी सिखाई। आपने अपने कॉलमों में भी पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो अपनी कौम को सिखाई और सारी जिंदगी आपके दिल में ख्वाहिश रही कि मेरा मुल्क इंडिया से बड़ा बेहतर हो। सर, हमें मानना होगा कि हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में उससे बहुत पीछे हैं और जंगें नहीं लड़ी जाती इकोनॉमी के बगैर। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, असला नहीं खरीद सकते और कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता सर। और इसकी वजह अगर आप देखें, मैं पहले बता चुका हूं कि इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह उनकी लीडरशिप की क्लैरिटी ऑफ विजन थी और उनकी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी थी। सर, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाए तो आपको हमारे हुक्मरानों को जगाना होगा, आपको तालीमी इदारों की सरपरस्ती करना होगी, आपको मेरी यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी देना होगी, आपको मेरी यूनिवर्सिटीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंड्स देना होंगे और सबसे बढ़कर आपको हमारे इदारों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोकना होगी। अभी हम यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ पर एचईसी पे डाका पड़ने की तैयारी शुरू हो गई। ये जो नई अमेंडमेंट आई है, उफ, इतनी तबाहकुन मैं बता नहीं सकता। इसके बाद वही हाल होगा जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का एचईडी करती है कि इस तरह चेयरमैन साहब सेक्रेटरी साहब के आगे पीछे फिर रहे होते हाथ जोड़ के, तो वो दिन दूर नहीं है जब मुख्तार साहब इसी तरह फिर रहे होंगे। हमें आज इस बात का ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। 22 साल में एक इदारा बना है, ये उसका यूजीसी वाला हाल करेंगे। 22 साल लगे इस इदारे को बनने में और इसकी खुद मुख्तारी में डाका। पहले इनकी बारी आएगी, फिर हर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की सरबराही को मिनिस्टर कर रहा होगा और फिर वहां पर एमपीएस बैठकर अपॉइंटमेंट्स पर भर्तियां कर रहे होंगे, तो हम रोक नहीं सकेंगे। तो आज हमें खड़े होना है एचईसी की खुद मुख्तारी के लिए। एक सेरेमोनियल सा रोल था कि ये मिनिस्टर के बराबर है, क्यों खत्म करने की जरूरत पेश आई। 2 पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर कमीशन के मेंबर थे, क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। 2 प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर मेंबरान थे, क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। और ये सोल अथॉरिटी का नया किस्सा कैसे शुरू हुआ। क्या किसी ने पंजाब एजुकेशन कमीशन से मशवरा किया, सिंध से मशवरा किया, सूबों से मुशावरत की, और ये बंद कमरों में बैठ के जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो कभी कामयाबी से हमकिनार होती हैं। अगर वाकई ये कोई बेहतरी की अमेंडमेंट लेके आना चाहते थे, इन्हें कमीशन मेंबरान से मशवरा करना चाहिए था, उनके एम्प्लॉय से मशवरा करना चाहिए था, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मशवरा करना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मशवरा करना चाहिए था और फिर कोई तरमीम लेके आना चाहिए था। तो आज मैं आपके सामने, इस हाउस के सामने, रेक्टर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन रेजोल्यूशन पेश करता हूं कि हम एचईसी की खुद मुख्तारी पे कोई डाका नहीं पड़ने देंगे। जो समझते हैं कि वाकई एचईसी को खुद मुख्तार होना चाहिए, प्लीज राइट हैंड जरा खड़ा। नहीं जी, सारे चाहते हैं। नहीं जी, ये मैसेज जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे उम्मीद है वो ताकतवर सेनेटर है और ताकतवर एडवाइजर है। पाकिस्तान की बात होगी तो वो डट जाएंगे, मुझे उनसे यही उम्मीद है। और मुख्तार साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, शाहिद मुनीर साहब को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ सारे पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर मौजूद है। तो जो मशवरा आपने पीर को करना था सर, वो आज हो गया। वो हो गया कि हम एचईसी की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे और बंद कमरों में जो है इस तरह की अमेंडमेंट्स है इनको नहीं होने देंगे। और हुक्मरान लोगों को बताना होगा कि उस्तादों में, तालिब इल्मों में और वाइस चांसलर में बेचैनी पाई जाती है और ये इलेक्शन के रोज हैं, कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन है, तो ये बेचैनी हुक्मरानों के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है।
इसके अलावा मैं डॉक्टर मुख्तार साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं आज डॉक्टर सुमेरा रहमान की खुसूसी दावत पर और हम सब की दावत पर वो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने सरपरस्ती की। कल के इवेंट की भी वो सरपरस्ती करेंगे। कुछ गुजारिशात शाहिद मुनीर साहब और डॉक्टर मुख्तार साहब की खिदमत में भी पेश करना चाहूँगा कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्लरिश करें और नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, तो सर हमें HEC के रोल को फैसिलिटेटर का रोल करना होगा, पुलिसमैन के रोल से थोड़ा अवॉइड करना होगा। और हम आपके हर अच्छे इनिशिएटिव को इंकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। NRPU है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है या इसके अलावा जो सीड फंडिंग अभी आप करना चाह रहे हैं स्टार्टअप्स में, या जो पोर्टल बन रही है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस के लिए, ये सारे बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव है। लेकिन ऑरिक्स को मजबूत करने की जरूरत है सर। हमारे ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है और हमारी फैकल्टी को कमर्शलाइजेशन के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह जरा पॉजिटिव पॉलिसीज मुहैया करने की जरूरत है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो भी आप इस तरह के इनिशिएटिव लें उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज रखी जाए। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ एफसेप की मैनेजमेंट का, जिन्होंने दिन रात की मेहनत से ये रेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इससे पहले ये एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी कर चुके हैं उन वाइस चांसलर के नाम जिनकी दिन रात की मेहनत से उनकी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल रैंकिंग में आई। वो वाइस चांसलर हमारे सुपर हीरोज हैं। इसके पहले एफसेप सी पाकिस्तान के नाम से अगस्त में अपने नौजवानों को ये सिखा चुकी है कि 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो करके अपने नौजवानों को सिखा चुकी है कि सिलेंसर निकाल के या किसी के दुपट्टे खींच के हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। अगर हमें 14 अगस्त मनानी है तो हमें ऐद करना होगा कि हम प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेके आएंगे, हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी और टीम वर्क से इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो एफसेप के सी पाकिस्तान की इनिशिएटिव या एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ ये रुके नहीं है कि सिर्फ हमें पाकिस्तान लेवल पे नेटवर्किंग करनी है, बल्कि एफसेप अब तैयारी कर रही है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाए। जिस तरह इंडिया अपनी यूनिवर्सिटीज को लेके जाता है, जिस तरह मलेशिया अपनी यूनिवर्सिटीज को लेके जाता है, जिस तरह टर्की लेके जाता है, इसके लिए जो सबसे पहली डेस्टिनेशन का इंतखाब किया गया वो इस्तांबुल का किया गया। 1 सितंबर को वहां पर यूरेशियन हायर एजुकेशन समिट मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हम अपना डेलीगेशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का लेके जाना चाह रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह इंडिया, टर्की, मलेशिया में उनके हायर एजुकेशन जो कमीशन है उनके तरह एजुकेशन की सरबराही करते हैं, तो मैं आज डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब और डॉक्टर मुख्तार साहब से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जिसे हम पाकिस्तान पवेलियन के नाम से मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उस वक्त की क़यादत डॉक्टर मुख्तार साहब करें। क्यों जी, क्लैपिंग इनके लिए होनी चाहिए। हमने ताली इसलिए बजा दी कि ये हमारे साथ जा रहे हैं। आखिर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब जैसे लोग हमारी कौम का सरमाया है, जो रिसर्च के लिए इन्होंने दिन रात खिदमत दी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तगमा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और पता नहीं क्या क्या सिद्धार्थ कौमी अवार्ड से नवाजा है। बल्कि यही नहीं, उम्मत मुस्लिमा ने भी इन्हें मुस्तफ़ा अवार्ड से, जो हाईएस्ट अवार्ड है, उससे नवाजा है। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि एफसेप के प्लेटफॉर्म से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाए। इनकी खिदमत मुल्क के लिए बहुत ज्यादा, ये कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ हदिया है, ये तो सिर्फ रिकग्निशन है कि हम, हमारी कौम और हमारे वाइस चांसलर आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह पाकिस्तान की दिन रात खिदमत करने का मौका दे। मैं और मेरी सारी टीम वाइस चांसलर हजरात की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, जो बड़ी दूर दूर से यहाँ इकट्ठे हुए। और हर एक वाइस चांसलर जो है वो कोई अच्छा काम अपनी यूनिवर्सिटी से कर रहा है। रेक्टर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम वो प्रैक्टिसेस शेयर करें और एक दूसरे से सीखें। कल का दिन बड़ा है। कल डॉक्टर सुमेरा ने
ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कल ज़ैदी साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कल इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात होगी, टाइम्स रैंकिंग की बात होगी, कल बाकी वाइस चांसलर पैनल में गुफ्तगू करेंगे। तो अगर कोई एक बात ऐसी मजेदार हम साथ ले गए तो और क्या चाहिए। तो बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि रेक्टर कॉन्फ्रेंस का मकसद आज ही पूरा हो गया। ये वो नेटवर्किंग क्लिप जिस तरह मैं खुशी से आप लोगों को मिलता देख रहा था, गप्पे लगाता देख रहा था, तो जो नेटवर्किंग हम करवाना चाहते थे वो हो गई। मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अब सब पाइंदाबाद। Thank you very much, sir. Sir very rightly said. First of all, the first point that we need to change our human resource into human capital, and secondly, Rectors Conference is a platform for networking because, as I said earlier, that together everyone achieves more. We can move on with this idea. And the third, very rightly said, sir, Pakistan's population is about, the youth are about 67%. And when we're talking about all the vice chancellors here and all the academicians, so 5,000, 10,000 people, 10,000 students, the future of Pakistan. So we can change the future of Pakistan. It is in your hands, and we can give them the three things that we normally, the chairman talks about. He takes that there are three attributes that we should give to our students. The first is the character, second is competence, and third is the skill set. So with these three categories that we can come up with, because this is what the main attributes of the 21st century are. So now I would be requesting, as Chairman Absa talked about very high about Professor Dr. Muhammad Iqbal Chaudhry Saab. So let's hear him from Dr. Saab that what he thinks about the Rector Conference and how we can take it further. So put your hands together, Professor Dr. Muhammad Chaudhry Saab. Chairman Absa, Faz Chaudhry, Chairman Higher Education Commission, Professor Dr. Mukhtar, बहुत मोहतरम इरफान साहब, Senator Irfan, Shahid Munir Saab, Excellency, thank you very much for coming. Excellencies, we see ambassadors of different countries, academic leadership of Pakistan, all of you. You see, the intellectual level of this hall, if you can measure it by any definition, is extremely high because we have some of the brightest people in this country under one roof. So we are absolutely fortunate that we created, FSF has created an opportunity of bringing the best and brightest of this country under one roof. I would like to introduce you to some guests, extremely valued guests who came from the continent of Africa, the vice chancellors of several universities. I think they're sitting at different places. I would request you to kindly rise and introduce yourself just to show that you are present here for a purpose. Please. Professor Dr. of the African continent, the rector of Islamic University in Uganda, Professor Dr. Warda, various universities in Kenya, Nigeria, Tanzania. Thank you very much, all of you, for being part of this extremely important conference, which is just described by Professor Chaudhry. You see, we in this country have actually moved forward from literally nothing. You can read the history, many of you are expert in this. We had only one university when this country was created, and a branch of Bombay University in Sindh. This was the only thing which we had in this part of the country. And now we have, alhamdulillah, close to 300 universities, and Professor Mukhtar will tell you that in every corner of this country, we have universities. And this is the right time that we not only improve the standard of these universities, make them at par to the best and finest institution of the world, but also to take them to the other countries also. On the forum of Organization of Islamic Conference, COMSTEC, which is a standing committee for science and technology,
in the Muslim world, we are here to take you to the other continents of the world. There is a need, there is a vacuum, there is a niche, there is an ambience, and there is an acceptance of the best universities to open campuses in Africa, in Central Asia, and in different places. I forgot that there are representatives of some universities of Kazakhstan. Are you around, please? The representatives and vice rectors of various universities in Kazakhstan are also here. Kindly identify yourself. Okay, so we have representation from different places, and out of my own experience of working with different countries, I find a general acceptance of Pakistani education system to be established in other countries of the world also. So I would say that this is a great opportunity, a historical opportunity, that we move forward, open campuses of our universities in different parts of the world. I want to end my very brief comments from the generosity, the connectedness, and sense of belonging of this nation to the Muslim world. You see, when Palestine was going through a major tragedy, we discussed this with Professor Chaudhry, and we discussed the possibilities of creating opportunities for young Palestinian scholars to come and study in this country. In 1 hour, he was able to solicit, in 1 hour, he was able to get the commitment from various universities for 500 fellowships. Unprecedented. Unprecedented in the history of OIC that one country and its universities were able to come forward with 500 fellowships for Palestinian brothers and sisters. I think this is the strength of our system. This is the spirit of Islam on which we all believe. FSF is an example of excellence. Over 50% of our children study in private universities. There should be no distinction between private and public sector institutions. I have heard Dr. Mukhtar talking about it. I'm sure that he would implement. He has long experience of leading Pakistan's education system, and his presence is a blessing. So thank you very much for being part of a very exciting experience, and thank you very much for supporting our brothers and sisters from other countries. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, sir. And welcome to all our international guests from Africa. So thank you very much. Your presence means a lot to the education fraternity here in Pakistan. So now, ladies and gentlemen, I would request His Excellency, Mr. Alfred Grenes, the Ambassador of Germany, to please come forward and share his views about the Rectors Conference. Chairpersons of all the wonderful institutions supporting higher education here in Pakistan, rectors, ladies, gentlemen. First of all, I have to apologize that I am, when it comes to language, an illiterate among the most highly educated here, because my Urdu is almost non-existent. So I'll have to address you in English. And another thing also makes it I must my little address without making a shame out of me. So certainly, I don't have any prescription for what you should do or not do, because this is not the way. No? We don't know better than you what is good for Pakistan. I thought, though, that I would share a little bit how our university landscape is organized and how education landscape is organized, because I think, and not only I, that education and also a university should provide
upward social mobility. And that is the way we try to organize our university system, which means that 95% of the universities are public universities with no tuition fees, but they are supposed to be good universities and provide quality education. And I think this is, most people tend to think that Germany is a rather successful society. One of the reasons why I would say is that it tries to use the whole potential of talent that it has in its youth. That's of course probably more important for a country that doesn't have that much youth anymore, but still it is I still say that it is something that goes for every country, and that's trying to provide education and also higher education cost-free and at a high quality is an approach we chose, and it has served us well so far. Another thing about peculiar bit about Germany is that there are many countries where people that do not go to universities but learn a trade are looked down upon. That is also something we really try to avoid, because not everybody can become an Einstein, but Pakistani universities do have in average a very high level of quality. That brings me to another theme I wanted to talk briefly about, is what can we do as Germany or European Union to contribute to the education of your talents. We very much like to take your best students, the best talents to our country, to provide them with education or additional education there. So I cannot promise that we wouldn't steal one or the other of them, because also we need talent. But the idea actually is that most of them should return and contribute to the development of Pakistan, and that of course usually also happens. Yeah. That is why we provide scholarship programs, some on our own, but always and very often in a very good collaboration with the Higher Education Commission, which we at HOOS for the collaboration very highly value. And there is also potential to do more, and I think we will be able to next year offer more places and open new programs. So I think there it's can bring some good news. Details have to be worked out still, but there will be more more exchange and more opportunities also for Pakistani students to go to Germany and then hopefully come back better equipped than they were before. One last thing I wanted to say, because we are very often asked about cooperation between Pakistani universities and German universities. The experience I have is that very often this is born out of scientific encounters and some conferences and things where people put their heads together and learn from each other and get to know each other and see that they're doing things that could be compatible and they could cooperate. So this is the natural way these things work. Another thing is, of course, that
what I was saying, we cannot and will not have your ideas. No? We are no scientists, we are no scholars, so we don't know what is good and whom you could collaborate with in Germany. So there, if you have ideas, you think that it could be useful cooperation with the church. I would like to conclude and wish you all a very fruitful conference, and thank you very much. Thank you very much, His Excellency, and thanks again for just appraising our higher education institutions. And talking, so you talked about that the collaboration between Pakistan and German universities. Yes, all the academicians sitting here, they would definitely have those plans and ideas there that how we can benefit, our universities can benefit from your universities there in Germany. And yes, we believe that our students should, we're talking about 67% as Professor Dr. Chaudhry Abdul-Rahman Sahab always says that those people to come. Dr. Makarzaul-ul-Iman Sahab, Chairman, Higher Education Commission, Janab Professor Dr. Chaudhry Abdul-Rahman Sahab, Chairman, APSAT, Janab Professor Dr. Muhammad Iqbal Chaudhry Sahab, the Honorable Excellency Ambassador of the Germany, all the worthy rectors and the Vice Chancellors, Assalamu alaikum. मैं एक दो बातें करना चाहूँगा in response to the conversation of Chaudhry Abdul-Rahman, और वो बातें मैं उर्दू में करूँगा क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ फॉरेनर्स भी तशरीफ रखते हैं। एक तो ये है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए जो अमेंडमेंट आई है, मैं अपने चेयरमैन साहब के साथ स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन में कौमी असम्बली में था, और वहाँ मैंने इनकी मौजूदगी में हायर एजुकेशन कमीशन को सपोर्ट किया था, और मैंने ये मुखालफत की थी कि इसको बिल्कुल मिनिस्ट्री के अंडर ना लाया जाए, और जो अमेंडमेंट्स इसमें लाई जा रही हैं हमने उसकी मुखालफत की थी और करते रहेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। हमें एक मजबूत HEC इन द नेशंस जब मैं अपना सरेंडर किया था और मैंने ये कहा था कि आप एक सोल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी हैं इस मुल्क के अंदर हायर एजुकेशन की, और PHEC आपके उन जो स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे उनको अचीव कराने में आपका मददगार साबित होगा, और हाँ, हम हर तरह से आपके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार है, जिसके ऊपर उन्होंने एग्री किया था मेरे साथ, और मुझे यकीन है कि इन फ्यूचर कोई कंक्रीट और पॉजिटिव स्टेप्स इस डायरेक्शन में लिए जाएंगे। दूसरा मेरा गिला चौधरी अब्दुल-रहमान और सबसे है, हमारे मसूद साहब यहाँ बैठे हैं, वो उसके मेंबर हैं, डॉक्टर सुमेरा रहमान जो अब आई हैं फेडरल अपने हमारे HEC में, PHEC में ये मेंबर हैं, और मियाँ हनीफ साहब वो इसके 3 प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स हैं। PHEC बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में परफॉर्म करती है कंपेयर टू HEC, और मुझसे फॉर्मर जो दोनों मेरे चेयरमैन हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो किस तरीके से HED
और PHEC और हथियारों के साथ हम चले। और दी बजट जो है वो हमारा इनसे कई गुना, अगर मैं गुना कहूँगा तो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बावजूद हम PhD फंडिंग, पोस्ट डॉक फंडिंग, कॉन्फ्रेंसेस फंडिंग, फॉरेन ट्रेनिंग फंडिंग्स में हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी उसमें देते हैं। और हर तरह की हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को भी करते हैं, जो HEC नहीं करता, हम करते हैं। इसके अलावा जो मेरा गिला ये है कि आपने PHEC की तो अमेंडमेंट आ चुकी है और एक और आई भी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए, और उसके ऊपर आप खामोश हैं, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की, वो जो कि PHEC पावर को कर्टेल करने के लिए। तो आपको यहाँ भी वो एक इक्वल स्टैंडर्ड करना चाहिए था। ये थैंक यू सर। दूसरी बात, अब कमिंग टूवर्ड्स the talk of the today, we held a conference at Murray that was a vice chancellor's conference, and that was on the paradigm shift in the higher education, and we invited the Dr. Samara Rahman in that conference. And I think this conference is an extension of that conference, in which I'm looking at some of the vice chancellors and then the rectors here, and the focus is on an entrepreneurial mindset, the cultivation of entrepreneurial mindset in the academia. This is again a paradigm shift in the higher education. We are living in a world. I will discuss some of the points that I had discussed in that conference, not the whole presentation, but some of the points, because I would like to sensitize the rectors on these issues. The current situation or scenario, global scenario, is unemployment. You know that the COVID-19 has added into the unemployment, and it has added 220 million unemployed people worldwide, and the unemployment rate has gone up to 6.5%, and it is the same in Pakistan and South Asia and worldwide about the 6.5%. And then another challenge that the world is facing is the bad economy due to COVID and due to wars. And you are aware that the war in Russia and Ukraine, and we know that the Ukraine accounts for 40% of global production of seed oil, corn, and wheat, and Russia accounts for 25% of the world's natural gas production. So the volatility of oil and gas prices during the COVID and during this war has given a very high economic shock waves around the world. So this is another challenge, another reality which we are facing. And then the climate change is one of the major challenges that the world is facing. And according to the Swiss Re Institute, the global economy could lose 10% of its total economic value by 2050 due to the climatic change. And similarly, according to the forecast, the hardest hit area will be the Asia. And here the impact of the climate change will swing between the 5.5% of the GDP to 26.5% of the GDP. It is a very, very huge impact that we can suffer. And then another challenge that the world is facing, the Pakistan in particular is facing, is the population growth. And it has been predicted that by 2050, the world population will grow almost 10 billion people. So it will be a challenge to provide them the food and the water, the medicines, and the other things of the need. Another challenge that the today's world is facing is the uneven distribution of wealth. And according to IMF, the richest 10% of the global population owns 76% of the wealth, and 50% of the population owns only 2% of the wealth. So this is another huge challenge. This is the imbalanced world, the world of disparities in which we are living. And then another challenge is the lack of skilled workforce and entrepreneurial universities. Our universities are not producing the skillful and employable youth.
And secondly, our teachers do not have entrepreneurial mindset. This is another challenge that we are facing. These are the 6 challenges that I wanted to bring in discussion in tomorrow and then the day after tomorrow. And then now I'm coming towards my topic is what the best universities in the world are doing in the field of research, because the primary function of the universities is the creation of new knowledge, and the creation of new knowledge is the business of research and development, which is a very, very costly activity. So I have, with the help of the World Economic Forum reports and the scenarios that they have published, I have identified the 11 research areas that will remain the axis of research for the next 50 years. I would like to draw your attention. I would like to sensitize you so that you can create the center of excellences in your universities in these disciplines. Number 1 is the material revolution. The discovery of the novel materials to develop the wonder products will remain the axis of research. We all know that the scientist has indicated that the scientist could only discover the 4% of this universe. The 96% of the universe has not been discovered so far. The 74% is the dark energy and 22% is the dark matter. So the avenues of the knowledge are infinite, the unlimited. And the researcher, if you look at the universities like the Imperial College, the researchers from the Imperial College London, Duke University and University of California have developed metamaterials. That metamaterial sheet, if you put that sheet on a building or a defense installation, it will camouflage. The human eye cannot look into the building. And if you look at the Royal Institute of Technology, they have developed a graphene-based nano paper. That paper is stronger than a steel. Even a bullet cannot enter into it. And similarly, the scientists of the various universities, they have developed like the California Institute of Technology and the Berkeley Lab have developed a glass that is stronger than steel. And the scientists from various universities found that the graphene can increase electron velocity and their collisions yielding super detectors. The professors from the physics, they can